Good morning. Good morning, Mohanji. Good morning, Anshul. Good morning, sir. How are you? I'm good, sir. How are you? I'm fine, thank you. आज आप पहली बार आ रहे हो टेस्ट क्लास में? क्या कह रहे हैं सर? Are you coming for the first time in this class? No, no, sir. I also joined last week. हेलो. अच्छा, आप पिछली बार आए थे, ठीक हाँ है। जी, मैं पिछली बार आया था सर. मैं कल नहीं ज्वाइन कर पाया. एज ऑफिस में मुझे जाना पड़ा. बट मैंने लास्ट वीक ज्वाइन किया था. कोई बात नहीं, see, okay. I think these sessions are being recorded by our friends in regional office, so यस सर. you will have access to them later on. यस सर, दैट विल बी रियली हेल्पफुल. या, थैंक यू. So how are you, Mohanji? Uh, Anshul, यस. let us wait for a few more minutes because our three other colleagues. नो वरी सर. श्योर. Uh, आई विल बी वेटिंग. One of them is in a hospital, so she will be ओके. joining somewhere around 11:45. But Mr. Shiv Dasan from Kerala and Miss Aarti, that's they will join. So Mohanji, we will little wait. You can stop the recording because otherwise it will just keep on eating bandwidth, and then we can start. श्योर. थैंक यू. Let us wait for around 5 6 around 5 minutes. If they join, it is good. Otherwise, we will continue with our session. Hello.
Okay, Anshul, I think we can begin. They may join. Sure, sir. Okay. So yesterday we started with block 4 of the course MDE 418. Only two blocks are remaining, and we have left with two classes. One is today, and the next one is on coming Saturday, that is 8th of July. So then we will be completing our these courses 414 and 418. So yesterday we discussed that there are these 5 units in block 4. So we covered yesterday about the interactive delivery tools. What are various kind of interactivity delivery tools, like learning management systems, web conferencing tools, webinars, like those things. And then uh, we discussed about mailing lists and other things. So this is unit 16, which is about mailing list, discussion group, RSS feed, etc. Okay, sir. Then next unit is on Web 2 technologies. The another unit is on virtual classroom and virtual reality. Then we have reusable learning objects and learning management systems. This is all about. Uh, this is very easy block, and mostly this deals with technology tools. So if you are, comfortable with the technology tools, it will be super easy. It's not at all theoretical things. Like email, I'm sure that you must be using email for a very, very long time now. And Yes. just to explain that how email can be used for effective communication, what are the purposes, like those kind of things. So that is in that. Uh, this unit focuses more on identifying delivery tools on the web, which we did yesterday, and describing their advantage and limitation of different methods and tools. So that were there. Today we are going to understand various models of teaching and learning where we use these tools, and means how these tools of technology they can be used for teaching learning. That is their usage, their impact, and all those things. That is the main target of this block and these units. So let us discuss some popular models, and I'm sure that you may be having a good idea about these models, uh, that how the teaching learning is facilitated using these technology tools. The most common model, which is prevalent for a very, very long time, is the traditional classroom model. So, and when we say traditional classroom model, as you know that this means that the traditional face-to-face classroom settings. And this is a rigid fixed model. At a specific time, a specific person will teach a specific topic at a specific place to certain specific students. So this is all traditional classroom, because the students are fixed. If you have your sixth class students, if you have your PG students, if you have your UG students, they are fixed. They stay with you till the program is there. And then your location is fixed, means whether it is a lab or a classroom, something. And then you have your timetable. So at a particular time, you go to a particular room, you teach a particular subject to some particular students. This is how traditional classroom is organized. But then we use various kind of technology tools in the traditional classroom teaching as well. So the tools which are used in this are learning management system platforms.
Do you have any idea about learning management system platforms? Yes, sir. I have a basic idea because I work in a company where these LMS tools are used. Oh, very good. Which company do you work with? Sir, McKinsey and Company. That McKinsey, that famous Yes, international. yes, management consulting, and I'm working as a human resource professional there from last 2 years. Very good. Then which LMS they use? Sir, actually, they have their own portal. Uh, So, yes. So, but in that portal, if you go and if you search for any particular topic like leadership or team management or time management, stress management, or any skills related to your job responsibilities, then there are plenty of resources available and some courses, some online courses, and there are some courses which are provided in groups, so you can register and then they will come back with a schedule and for 1 hour or 2 hours, and there will be a trainer who will providing you the training. that this is very nice. That's Yes. great. So good. Anyway, let me show you some of the other learning management systems which are very common, prevalent. And Okay. let me share my screen so that I can. So we can divide the learning management systems into three categories. One are called as proprietary. I hope you know what is meaning by proprietary systems. Yes. We have certain proprietary learning management systems. So here to use them, we have to pay certain fee, either purchase or in terms of subscriptions to that. That can be either means on a tenure basis, annual basis, or a one-time fee, or sometimes it is perpetual fee that you pay it until the life of that software you keep on using, and whenever there is any upgrade, then the company takes care of that. Okay, sir. So that is there. So the example of proprietary software, one of the good one is uh, Blackboard LMS. This one. This is very powerful, and means it is being used by educational institutions, then um, industries, organizations, international organizations, like that. And this is cross-platform system, which can be used using means any kind of device, whether it is desktop or a tablet or a mobile phone, something like that. So this is quite powerful. Um, in addition to, okay, let it is coming. Uh, so this is there, and in fact, although it is a, proprietary software, but then there is one Blackboard course site which is open source, uh, means alternative to that of the same Blackboard, their LMS. So that way, they have offered their product to both the segments. Those educational institutions who are have some financial constraints, they can use their open source instance as well. Then we have another one. This is called as LMS. So this is another, you can say, for talent development software, flexible. Perhaps in your free time, although means,
McKinsey has provided you their own in-house developed LMS, but I think you can still um, try this one. And if you see, sir. they offer for there as a talent experience platform, and so automated by audience compliance training, culture of coaching, employee development, engaging learner, extended enterprise learning, onboarding, all these things depending on the requirement of the customer. Got it. And it's not only for educational sector, you can see the long list by this sector. So this one is being used by healthcare, retail, government sector, technology firms, financial firms, hospitality, travel industry, sports industry, business industries, education, manufacturing, non-profit organizations, etc. So they make their products in such a way that you can mount your training or content in such a way that it can serve the need of a particular entity. There is another very interesting. It is called as BRI Brightspace. This one is by there is a firm. It is called as Desire to Learn, D2L. This D2L. The full form is Desire to Learn. So here you can see they have various onboarding services, customer success, learning, performance enhance, and create those means customizable content. And they offer their solutions to various sectors, like for education as such, for primary education in the form of blended learning. uh, we are going to understand these modes of learning. In fact, today we are focusing on this, like blended learning, virtual learning, professional learning. Similarly, for higher education, continuing learning, competence-based education, professional development. Then it serves corporate sector as terms of customer training, employee training, partner training, or it's by industry-wise. You can see it serves. Then for associations, for public sectors, and then there are so many things which it offers things for there. So these are some of the examples of there. Then we have open source. I hope you understand what is a open source code. Can you explain? Do you know what is open source? Sir, which one? Sorry, didn't get your question. Open source. What do we mean by open source code? So, I think which are available to anyone without any subscription or something. Yes, yes, good answer. But there is one more, that is there is one more part, because that can make it free, Yes, sir. like Google Map. It is free, but it is not open source. So for Okay. being open source, there is a special condition. Okay, sir. No idea? No, sir. Okay. So the important thing is the code which we call as open source means Mhm. that the code is available to you and you can modify, revise as per your needs. That is called as open source. So Okay, understood. we have free platforms. You use free of cost them, Mhm. and then this has given rise to another branch. It is called as FOSS, free and open source. Okay. Sir, So like there are, In Wikipedia also we can yes, upload yes, information. yeah. Or maybe you already perhaps know about like Linux operating system. I hope you must have heard about it. Yes, yes. So Linux, you can see here, it is a Unix-like open source community developed operating system. Okay, understood. So it means that you can download the Linux, and if you know the programming, you can edit the code. Okay, so we can Similar, modify it as per our requirements. yes, certainly. Similarly, like Java. Java Got is open source. And perhaps you maybe, I don't know if you are connected using Firefox. Yes. Firefox is also an open source web browser, which was developed by. You can read it here in the right side.
Firefox is a free and open source browser developed by Mozilla Foundation. So there are Okay. many examples. Even Microsoft Office, if you use it, Microsoft Office is a paid subscribed software. But if you don't want, then there is a one very good. It is called as Open Office. This is open source. You can see here, free and open source. Okay. Open office. Yeah, and means previously they used to call it, and now their other projects are like LibreOffice, LIBRE, LibreOffice. Everything will work the same in a way. The Microsoft Office, you can see free and open source software, and you can download them, and they will work like your MS Word, your spreadsheet program, and many things. So here 7.5 version is the latest version, and you can download all these things like for Android, for iOS, App Store, and for business users. This is how, say, like for diagrams, for database, for mathematics, for charts, for making presentations, for calculate. The calc is for spreadsheet, writer is for their word processor, those things, etc. These are all. It's a community-driven project. So if means those people who don't want to go with that, they can easily, and many millions of people across the world, they are using it. You can see here, it's a free and open source software. So there are certain softwares which are only free, they are not open source. There are certain softwares which are only open source, means you can download them. And then there are any external services, extra services required, then they, and then these are FOSS, we call them as free and open source software. So where the community is there to help them, and these are wonderful things. Oh, this is an interesting thing. Do you know about this Mastodon? You see my No, mouse pointer? no, sir. I'm not aware about this. Okay, okay. This is a very interesting thing. Let me tell you. Mm-hmm. Although it is a political mudda. Sometimes ago, the government of India, particularly the previous, I think, information minister, every day in the morning he will get up and he will give some statement that we will close Twitter because Twitter is not following our rules regulations. Twitter is behaving strangely. This that. And then when there was the anti Twitter feeling in India, then the Mm-hmm. government of India, this is an Indian product. Koo. Have you heard about Koo? KOO? No. This, let me show it. I hope you see my screen. Yes, yes. Okay. It is an Indian microblogging social networking service owned Okay. by Bangalore-based Bombay Net Technologies. So it is Indian Twitter. They created it as a substitute, although it is not that successful. Even Okay. those people who were opposing Twitter, and when Twitter stopped there that blue tick, they were in a Yes, frenzy. yes. Yes. सब पागल लोग फिर रहे होते हैं कि नहीं मेरा चला गया एंड इन ए वे मैनी पीपल देवर इन ए बेगिंग स्टेज कि ट्विटर तो वो छोड़ भी नहीं सकते ट्विटर को, और उसका क्रिटिसिज्म भी करना जरूरी है। हाँ जी। तो ये खूब चलाया लोगों ने कि भाई हमारा इंडियन है, आप इसको यूज करो। मैनी पीपल हु आर देयर दे इवन दे डिडंट नो, बट दिस मेस्टोडॉन, that is a open source microblogging. Microblogging is like sending a short message. Mastodon. Actually, these things they will not be in your course because the course was written somewhere Okay. around 10 years ago, and many things, many tools they have done. That's why I'm sharing, because whatever is in your book, you can read it at any time. I'm Okay. sharing those things which are not in your book, but which are as a part of your book. So this is Mastodon.
and it is you just saw it was written there that it is a open source uh, tool, and you can see here at present the server statistics. uh, oh, okay, here is some, I think somebody is targeting Elon Musk. Okay. Yeah, someone make money. People are using it for all kind of things. So you can create your account into it, and then here, oh yeah, this is the news of today, because he has restricted the Twitter usage, because they say that many of the bots, the AI tools, they are doing data mining using Twitter. And I was surprised when I saw that the verified accounts, they can read only 6,000 posts. And I was thinking, who person has this much time that in a day he will read 6,000 posts? Seriously, if they But keep then I crawling, realized that you don't need a human person. There are tools which can keep on reading and extracting data from there. right? So a person who has unverified, like my account is unverified. I never went into this blue tick there. So those people, they can read 600 posts per day, and this is even if you see that you take 1 minute in reading one post. So the new unverified accounts take 300. So that means 300 minutes. Right. So, People have a lot of time, they to go with that. So this is anyway. This is a an example of the open source thing. So in terms of learning management system, one of the most popular learning management system around the world on a global scale is Moodle. This is used, you can see here more than 4 crore courses are there, so many websites. It is more than 240 countries, the people they are using it. This is completely open source. In our university here, we also use Moodle, okay. and this is highly popular among the teaching community. And its mobile app is also good, and then it is can be used in across all kind of platforms. So here you can see that open source learning platform it is written. Then there is another one which is also very popular. It is called as Sakai learning management system. Sakai is 100% open source. So you can keep writing these names so that when you prepare for your course. Yes, sir, I'm writing. Uh, Although I think you may be having access to the recording later on. So this is Sky. It is, you can read it here. It helps instructors create truly inspiring learning experiences like that. And then we have another one. It is called as Joomla Learning Management System. It is an award-winning content management system to build online applications and websites. So many people they create their ID on it. You can see there it is free, and they create their own websites, including educational institutions. They use it. So it is a free and open source content management system. So you can download it and start building your own website. And I know there are many institutions, many individuals who use this. You just need your server space to create your applications. So in traditional classroom teaching, teachers use learning management system, and then there are free learning management systems also. The most common among them is Google Classroom. This is free. Free means you can use it free, but you can't add means revise the software. So that is the difference. Here, this is the you need to sign in, and then it will take you like these are my classes. Business law I taught, given means I gave some training to some people, and this is a course on biology for Delhi.
This is a live course. Means actual students, real examination was conducted using this for botany, microbiology, and like that. So you see how we use these tools for us. Then in traditional for our thing, we use video conferencing tools as well. So, okay, we still only okay. So video conferencing tools. There are various examples of video conferencing tool. Currently, we are connected using Google Meet. Google Meet. Yes. Google Meet has a very unique facility which is not available in other systems. Like if I demonstrate it to you here, this is closed captioning. And once I turn it on, and after that, whatever I will say, it will keep on typing on the screen. So you see here, and then if I say that using various content delivery tools, different models of teaching and learning can be employed to enhance the educational experience of the students. So let us discuss some popular models and how they can be facilitated using these tools. You see, whatever I'm speaking, it is typing on the screen. And Yes. you will find that hardly there is any mistake in what it is typing. Yes. It's Very very interesting. accurate. Yeah, it is very interesting thing. And at present, it is in typing it in English. But then I can, language of the meeting is this one, and I can translate it into other languages as well. You see here Chinese, Dutch, French, German, Indonesian, Portuguese, Spanish, Turkish, Vietnamese, like that. So, for example, let us go with Spanish, and we have activated it. And then now, if I speak anything, then automatically it will type it in Spanish. So this is the advantage here now that if you have your friends who speak a different language other than English and we do not know that language, we can talk to them, and means it's a nearly accurate translation it does, and this is live. The only disadvantage is that you can't download it. you know, it's only on the screen. It cannot be saved that way. For that, there are other AI-based tools in which they translate, and then uh, Yes. you can use Google Translation in a document, but then you need to type it and then speak it, or then it will do that translation. Uh, so that this is a good means a power of this software. And similarly, if you click on it again, that CC1, then you can turn it off. But this is a very good facility for inclusive education. Inclusive education means we need to take care of our those students who are challenged in some special way, like hearing challenge. There are some students who may be, um, in this case, those who are hard of hearing, they can see it on the screen what is being typed, and then they can read it from there. Got it, sir. This is called as inclusivity. And our national education policy, which was launched 2 3 years ago, it lays a greater emphasis on inclusive education. So we need to take care of those our students who are differently abled. Yes. Then perhaps you may already be knowing about the most popular application, the Zoom. Yes. So the advantage is that this is available to you free of cost for 40 minutes. It does the recording. Google Meet Right. में एक problem है कि you can use it, but you cannot in your free version you cannot record the session. That is Okay. a challenge with Google Meet. So many people who want a recording of their session, then they can use Zoom. And that 40-minute restriction is not a big problem. If your session gets over, you can click on the same link and rejoin. The only thing Yes. is that there will be 1 minute gap. Means you logged out and then you come back again. But I don't think that is a big issue. That way, Yes. this It can be will managed.
Yeah. Similarly, we have WebEx. WebEx is more popular with business houses because it is very professional software. So this is WebEx. The advantage of WebEx is that free version allows 100 participants, but there is no time limit into it. You can go with more than once. 2 3 years ago, I conducted an international conference, and I used WebEx, and that conference was for 3 hours, and I recorded everything without any problem into that. So that way, this is another platform which we use. Then there are assessment tools or online tools. So in traditional, we were discussing about traditional classroom model. In this model, the instructor delivers lectures and facilitates decisions in a face-to-face classroom. However, technology can be integrated to enhance engagement and assessment. This is one model. The another model which is very much used using technology is called as flipped classroom model. Have you heard about this flipped classroom model? No, sir. Never heard of it. So this is, let me show it to you in this image. Flipped class. This is broadly giving you an idea of what is a flipped classroom. In this, the students they are engaged with instructional content outside the classroom, whereas the class time is dedicated to interactive discussions and activities. Okay. So we invert the class. In traditional classroom, during the class time, the teacher teaches, then gives the homework. The students go home, they do the homework, and then come back to the classroom. That is the traditional system. But in flipped classroom, we do the opposite. We tell the students that read everything when you are at home and come to the classroom during the class. Then we will discuss those. We will provide the feedback, discuss those things, do the activity, engage into that, and provide the feedback like that. This, it has been found a very good pedagogical application because in that case, then uh, we have more time to discuss and provide feedback. लेकिन वो कई बार ये चलता नहीं ये वाला सिस्टम क्योंकि आप जानते होंगे स्कूल्स में कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में टीचर को सिलेबस खत्म कराना होता है Right, sir. और जब सिलेबस खत्म कराने की बात हो तो वो कहेगा कि डिस्कशन के लिए अभी टाइम नहीं है बाद में देखेंगे और वो बात भी नहीं आता Yes. इसलिए स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है उसको फ़र्क पड़ता है क्योंकि जब तक हम स्टूडेंट्स की लर्निंग को समझ कर उसको फीडबैक नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा Right, sir. तो इसलिए फ्लिप क्लासरूम मॉडल जो है वो बहुत एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी पाई गई रिसर्च के दौरान अब इसमें किया क्या जाता है द टीचर्स दे कैन अपलोड देयर प्री रिकॉर्डेड वीडियो और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑन ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. Video conferencing tool can be used for synchronous discussion, clarification, collaborative activities, or interactive presentation can be created in an engaging way. Which Okay, sir. तीसरा मॉडल है ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल बड़ा कॉमन है आज आपने भी सुना होगा कई बार इसका नाम ब्लेंडेड लर्निंग BLENDED Yes. ब्लेंडेड लर्निंग. अब ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है जैसे ये मैं आपको इमेज दिखाता हूँ ये ये दिख रहा है ना वो आपको. सो ब्लेंडेड लर्निंग क्या हो गया अब वो फोटो देखते हैं कहाँ है. ये है एक तरफ ट्रेडिशनल क्लासरूम है जिसमें टीचर अपने स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाते हैं. एक तरफ कम्प्लीटली ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स है अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ HOE. This is a fully online university. It is private in Arizona, founded in 1976.
अब आप देखो कितनी पुरानी है ये यूनिवर्सिटी। दिस इज ऑल ऑनलाइन। ओके सर। तो एक तरफ तो आप देखते हो ऑनलाइन सिस्टम, एक तरफ है ट्रेडिशनल क्लासरूम। जब हम दोनों को मिला देते हैं तब वो ब्लेंडेड लर्निंग बन जाता है। यानी ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग भी रहेगी, ऑनलाइन टीचिंग टूल्स भी रहेगा, और वो ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच बन जाएगा। तो इसमें ये इसके एडवांटेज हैं। इट इज़ इक्विटेबल, क्योंकि स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी दैट आर डिफिकल्ट टू एकोमोडेट इन क्लासरूम, और स्टूडेंट विद दिस ऑटिज्म एंड अदर थिंग्स, ASD इश्यूज, और इंट्रोवर्ट्स जो क्लासरूम में ट्रेडिशनल क्लासरूम में नहीं बोलते, ये मैं पाया गया है कि ऑनलाइन सेटिंग्स के अंदर वो बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यू विल फाइंड देम दे गेट मोर सोशल विदाउट क्लासरूम डिस्ट्रैक्शंस। दूसरा इसका एडवांटेज है कि इसको यूज़ करने से टेक्नोलॉजिकल सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे किस तरीके से आप हाउ टू एबल मीन्स यूट्यूब, और फॉर्मल ईमेल कैसे लिखनी है, समथिंग दोज थिंग। इट इज़ फाउंड टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, तो कि आप लॉन्गर रन में आप करते हैं और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बच जाता है। यू डोंट नीड मोर क्लासरूम्स और समथिंग, फ्यूअर क्लासरूम्स। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, जगह ही नहीं है यहाँ पर, तो नए कोर्सेज कई बार क्रिएट करने में यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हैं कि इनके लिए रूम्स कहाँ से आएंगे। ऐसे केस में यदि हम ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच कर लें कि कुछ सेशंस हॉल के अंदर लगा लेंगे, बाकी आपकी जो मोस्ट ऑफ द क्लासेस, मेजर क्लासेस है, वो ऑनलाइन चलेगी। और आजकल तो आप जानते हो कि कोरोना के बाद से इवन स्टूडेंट्स भी डिमांड करने लग गए थे कि हम नहीं आ पाएंगे, और किस तरीके से जब ये इनफैक्ट बड़ी अजीब चीज़ है ये, जब तक लॉकडाउन शुरू शुरू में चल रहा था तो लोग बड़ा याद कर रहे थे कि नहीं स्कूल कब खुलेंगे। और बिलीव यू मी, जब स्कूल्स खुल गए तब लोगों को लगता था सर आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि सर मैं गांव आया हुआ हूँ और अभी मैं कॉलेज नहीं आ सकता। बहुत रिक्वेस्ट आई थी हमें ऐसी ऐसी, बट द गवर्नमेंट इशूड ए ऑर्डर कि ऑनलाइन क्लासेस अब नहीं होंगी, सबको फेस टू फेस सेटिंग्स में बुलाया जाएगा। बट इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस का एक बहुत बड़ा इशू है। फिर ये फ्लेक्सिबल है, मीन्स आप इसमें अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, जैसे आप तो LMS यूज़ करते हो, आप जानते हो, उसके ऊपर आपका ट्रेनिंग कंटेंट आ गया तो आप जब भी आपको ईजी है आप उसको देख सकते हो। ट्रेडिशनल क्लास के अंदर तो 10 बजे से 11 बजे तक क्लास है, तो वो तभी तक है, उसके बाद नहीं मिलेगी आपको। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तो आप कभी भी देख सकते हो आप उसको। So these are the things which are a advantage of the blended learning approach। और इसी तरीके से इसके अंदर मोबाइल ऐप भी आप कंटेंट को और इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर एक और मॉडल है जो आपके कोर्स को डील करता है। इट इज़ कॉल्ड एज कोलैबोरेटिव लर्निंग मॉडल्स। So this is here. Collaborative learning can occur peer-to-peer in larger groups. It is a type of collaborative learning that involves students working in pair or to discuss concept or find solutions to problems. और जैसे ये मैं आपको एट रैंडम ये वाला इमेज दिखाता हूँ, तो किस तरीके से कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लान कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो, ये तो इनपुट फैक्टर्स हैं कि लर्नर का रोल क्या रहेगा, इंस्ट्रक्टर का रोल क्या रहेगा, लर्निंग मीडिया कैसे बनाने हैं, कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनको लेकर फिर आप एक क्रिएटिव प्रॉब्लम प्रोसेस, वर्चुअल टीम, और वो बनाया आपने, और इसका आउटपुट क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ कोलैबोरेशन स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। दिस इज द बेनिफिट ऑफ this create means model. So here you can see that it is used for creative problem solving, to enhance creative thinking and collaboration skills. ये एक मॉडल है। फिर पांचवा मॉडल मैं आपको बताना चाहता हूँ, इज कॉल्ड एज
personalized learning model. So this is personalized learning. Let me see some images. क्योंकि इमेज देखने से आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा. So these are the personalized models. यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसके हिसाब से हम कंटेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं. जैसे प्लानिंग प्रोसेस फॉर पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम्स. मैं ये वाला यदि इमेज खोलूँ तो आप ये यहाँ देख सकते हो. एंड कम्युनिटी एंगेज है, डिवाइस को कौन से को करना है, 1-to-1 एजुकेट पार्टिसिपेंट्स फेज. और इसका एक एग्जांपल है, आपने ये वाली ऐप देखी है, ये वाली ऐप. Yes, sir. Duolingo. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऐप. इसमें वो शुरू में जब आप अपना साइन अप करते हो तो आपसे ये पूछते हैं कि आपका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, और उसके हिसाब से फिर ये आपको कंटेंट ऑफर करते हैं. सो हियर ये देखो, आप आ गया ना, पर्सनलाइज्ड लर्निंग. कंबाइनिंग द बेस्ट ऑफ एआई एंड लैंग्वेज साइंस, लेसन्स आर टेलर्ड टू हेल्प यू लर्न जस्ट द राइट लेवल एंड पेस. दिस इज कॉल्ड एज पर्सनलाइज्ड. और ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो लोग धीरे धीरे चल सकते हैं वो धीरे धीरे हैं, जो फास्ट चल सकता है वो उसके लिए कंटेंट. एक ही प्लेटफॉर्म अलग अलग नीड्स को सर्व करता है. Okay, so this is about these teaching learning models. नेक्स्ट हमारे कोर्स में है लाइक ईमेल एज ए डिजिटल कम्युनिकेशन टूल. आपके हिसाब से व्हाट इज ईमेल? Sir, what is? Sorry, how can we define email? Email. Yeah. Email is electronic email. Yes. Electronic letter. Oh, प्याली जी आ गए. What is the report? What did the doctor How say? are you, sir? Sorry for the delay. I just joined in, and I'm seeing something familiar on the screen which I saw yesterday. because अभी हम मैं और अंशुल जी बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ जब तक आप ज्वाइन No, I heard that you were talking about blended learning, and then you were talking about collaborative learning method. हाँ, एक्चुअली एक टॉपिक है इसके अंदर, मॉडल्स ऑफ टीचिंग. So we were discussing models of teaching, and in models of teaching, how a particular technology tool can be used for a particular model of teaching. We discussed that. So we discussed that how in a traditional classroom teaching model we can use which tools can be used. Then flipped classroom model, FLIPPED, flipped classroom model, that was there. Then we discussed blended learning. मेरे ख्याल में तब तक आप शायद ज्वाइन कर चुके होंगे. Yes. Blended I learning. didn't miss much. Collaborative learning, personalized learning, ये models हैं. So means these models, they can be combined or customized based on specific educational context. So can you just elaborate on flip? Okay, flip में क्या करते हैं? Just a synopsis. हाँ, जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता है कि मान लो जैसे बाल भारती स्कूल है जी, ठीक है, तो उसकी लोकेशन फिक्स हो गई, बाल भारती जहाँ है वहीं है जी. और फिर टाइम टेबल होता है स्कूल का, 7 बजे पहली क्लास लगेगी, तो 7 बजे से 8 बजे तक एक क्लास है, 8 बजे से 9 बजे तक दूसरी क्लास है, फिर 10 बजे तक तीसरी क्लास है, तो वो फिक्स हो गया. ठीक है, फिर टीचर फिक्स हो गए कि अंशुल ने हिस्ट्री पढ़ानी है, प्याली ने ज्योग्राफी पढ़ानी है, पति ने मैथमेटिक्स पढ़ाना है, फिर आपकी क्लास फिक्स है. एवरीथिंग इज फिक्स्ड इन ए ट्रेडिशनल क्लास. और उसमें क्या होता है, जब क्लास शुरू होती है तो आप क्लास में जाओगे, अपना कंटेंट पढ़ाओगे, उसके बाद स्टूडेंट्स को होमवर्क दोगे कि घर से ये करके लाना है, हम नेक्स्ट डे इसको चेक करेंगे. फिर बच्चे आते हैं, आपको कॉपी दे देते हैं, उसको आप क्लास में चेक नहीं करते, उस वक्त तो आप फिर अपना कोर्स पढ़ाते हो. और जब आपका अपना ब्रेक होता है या शाम है, फिर आप उन क्लास को चेक करते हो,
देखो ये ट्रेडिशनल क्लास हो गया। इसका एक नुकसान ये है कि स्टूडेंट्स को हम फीडबैक नहीं दे पाते कि उसने क्या सीखा, कितना सीखा, और उससे जो एक्चुअल लर्निंग है वो पूरी डेवलप नहीं हो पाती। फ्लिप क्लासरूम में लोगों ने ये पाया कि आप इसको उल्टा कर दो, जो होमवर्क वाला काम है वो क्लास में करो, और जो क्लास वाला काम है वो बच्चे घर पर करेंगे। यानी आप बच्चों को बोल दो कि आज हम पॉल्यूशन के ऊपर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आप जब घर पर होगे तो आप पॉल्यूशन के बारे में अपना पूरा चैप्टर आपने पढ़ना है, और फिर आप अपने क्वेश्चंस बनाओ कि आपको क्या समझ में नहीं आया, कल हम क्लासरूम में उन क्वेश्चंस को डील करें। सो इट इज़ समथिंग लाइक इग्नू जो फॉलो कर रही है शुरू से काउंसलिंग सेशंस। ट्रेडिशनली काउंसलिंग के अंदर क्या होता है, आप लोग अपने क्वेश्चंस लेकर आने चाहिए जिनको आपका काउंसलर डिस्कस करेगा आपके साथ। Lecture method is not promoted or encouraged in counseling sessions because we want to hear more from you and discuss that. So that is a type of a flipped classroom जिसके अंदर ट्रेडिशनल क्लासरूम को उल्टा कर दिया। So it's more of an interactive classroom इट session. इज़ वेरी मच इंटरेक्टिव, क्योंकि ट्रेडिशनल क्लासरूम में तो टीचर क्वेश्चन पूछेगा तभी स्टूडेंट आंसर देगा, अदरवाइज तो टीचर ही टीचर बोलता रहता है। तो Right. यहाँ पर ये है कि हमने उसको इन्वर्ट कर दिया, that the students they are more active, engaged, and teacher acts as a guide, you know, Okay. to show them the path. Thank you, sir. अब हम नेक्स्ट हम लेंगे ईमेल। सो दीज आर दी सिंपल थिंग्स। ओके, पहले आप बताओ आपके हिसाब से ईमेल को कैसे डिफाइन करोगे? Sorry, sir. हाउ कैन यू डिफाइन ईमेल? Email is a way of communication. Uh, Easy. I mean, in sense, what email you wanted? It's a way of communication. That's the वे कम्युनिकेशन तो आप चिट्ठी भी लिख सकते हो। no electronic communication. हाँ, ये चीज है ना मेन तो। हाँ, But when we say email, that means that electronic way of communication. short for electronic mail is a digital communication tool. Yes. Email means digital communication tool. आगे वो जो आपने बोला वो सही है, which allows the exchange of message and files between individuals and groups over the internet. Right. और जब से ये आया है ना, इसने कम्युनिकेशन के फील्ड को बहुत चेंज कर दिया। तो इसका एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, जैसे अभी आपने सही बोला, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, बिकॉज इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, वेरी एफिशिएंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स लाइक स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। और ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, you send your email and when the other party gets time they can see it and can respond to that. देन इसका एजुकेशन में यूज़ होता है असाइनमेंट सबमिशन के लिए, फीडबैक के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, अनाउंसमेंट्स के लिए, रिमाइंडर्स के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। you know, I can send mailing list or subscriber to newsletter, engage in email discussion with colleagues to stay updated on this latest research, pedagogical practices, Even professional results. results, yes, certainly. इनफैक्ट आजकल तो सब कुछ ईमेल से ही हो गया है। जी. आप खुद देखो, आपने किसी को लेटर कोई कब लिखा होगा? But we used to enjoy the notice board results. सही बात है, बल्कि अब तो एयर ट्रैवल के ऊपर भी सब कुछ पेपरलेस हो गया है। Absolutely. है ना, वो पहले तो कहाँ प्रिंट आउट, पहले तो टिकट होती थी, टिकट बंद हो गई, कहते कि आप प्रिंट आउट ले आओ। अब आजकल तो प्रिंट आउट की भी Paperless. जरूरत नहीं है, आपके Paperless. फोन के अंदर ही। सो थिंग्स आर मूविंग इलेक्ट्रॉनिकली वेरी फास्ट इन दैट वे। यहाँ पर इसका ना एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसमें हम तीन चीज़ें बोलेंगे। मैं यहाँ पर टाइप ओके, मैं क्योंकि मेरा स्क्रीन शेयर है तो मैं उसी में ही करता हूँ ताकि आपको उसके एग्जांपल भी दिखें। एक हम डिस्कस करेंगे अब मेलिंग लिस्ट। डू यू नो व्हाट इज ए मेलिंग लिस्ट? It's a database of all your contact sheet. हाँ, जहाँ पर आपका एक ग्रुप है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा होने चाहिए। इंडिविजुअल में तो इंडिविजुअल बन जाएगा। जी. वी हैव ए ग्रुप of means some like we call them as
SIG, self-interest groups, similar interest groups, not self. We call them as SIGs, similar interest groups. तो किसी एक टॉपिक को लेकर, मान लीजिए जैसे पॉल्यूशन को लेकर आपने एक ग्रुप बना लिया, तो लाइक माइंडेड पीपल आर देयर and you don't need to, so there is a common message which you want to go to everybody in one go. At that time we use this mailing lists. So you have the MailChimp these days. That is a software which allows you to use that. So immediately that MailChimp it sends message to everyone. The good thing is that we can customize the mail. Means although it will be sending email to all 100 people, but then it will go there to everyone by name. तो समथिंग वो जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज आपने देखा होगा, हम एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और उसके अंदर फिर हम नेम सरनेम बाकी जो चीज़ें हम ऐड करते रहते हैं वो मेल मर्ज हो जाते हैं. सो उसी तरीके से दिस इज नाउ there are certain, let me show you some examples of mailing lists. और मेलिंग लिस्ट आपके लिए बड़ा इजी है. आप गूगल के अंदर बड़े आराम से मेलिंग लिस्ट वगैरह आप बना सकते हो. उसी का तरीके से एक और उसको हम बोलते हैं लिस्ट सर्व. It is a computerized list of name and email addresses that a company or organization keep. They can send containing information or advertisements. This is called as list serve. और ये बड़ा इजी है गूगल के अंदर आपको बनाना. आपने इसका नाम सुना होगा ना, गूगल ग्रुप्स. गूगल ग्रुप्स, you can easily create Google group and okay, these are my Google groups. आप ये देखो यहाँ पर, जैसे 2018 से एक ये है, 2017 से ये एक शुरू किया था मॉडर्न एप्लीकेशंस को लेकर. एंड मैं जैसे कौन से वाला देखूँ. ओके, let me see. So here this is by NPTEL. They send the email to all, and if you click on members, you can see all these members. 4206 मेंबर हैं इस ग्रुप के अंदर. अब आप ये देखो कि यदि आपको 4000 लोगों को ईमेल भेजना हो एक एक करके, तो आप तो उसी काम में लगे रहोगे दिन रात. So that's why this is the advantage of mailing lists or list serves, that immediately you create one message and then it will go to everyone immediately. तो ये बड़ा इजी है. आप गूगल ग्रुप्स में हो, यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट ए ग्रुप, ये जैसे ये ऊपर है, एंड देन इट विल आस्क यू लाइक हम यहीं पर ही अपना, यदि मैं आपको कहता हूँ एक MDE चंडीगढ़, ठीक है, और 2023 हमने ये ग्रुप बनाया. ग्रुप का डिस्कशन, ग्रुप ऑफ इग्नू स्टूडेंट्स ऑफ MDE 414 and 4118. ओके, ये हमारा ग्रुप का ईमेल हो जाएगा. एंड यू क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब who can invite, who can do all these things, who can post, you can make certain changes. अब यहाँ पर मुझे करना है मेंबर्स को ऐड, और ये है डायरेक्टली ऐड मेंबर्स, सेंड द इनवाइट. सो हेयर I can send the invitation directly members. I can put a message and this will become a group. So here I can say welcome to our group. Okay. And सब्सक्रिप्शन में आप डिफाइन कर सकते हो, जब भी कोई ईमेल हो इमीडिएटली वो चली जाए या वो हो, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट ग्रुप. Sir, in the group, just sorry, a question, sir.
बोलो. In the group, sir, once you create the group, the members can only see the message if you are subscribed. वो Or आपको अपनी सेटिंग्स में चेंज करना होगा कि आप मीन्स उसमें जो 3 तरह के मैसेज जाते हैं, मॉडरेटेड, अनमॉडरेटेड. मॉडरेट वाला तो जब तक जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं जाएगा. अनमॉडरेटेड मीन्स कोई भी मेंबर कोई भी पोस्ट करेगा इमीडिएटली वो सबको डिलीवर हो जाएगा. ठीक है. अब जैसे ये है मेंबर, अभी मैं अकेला हूँ और मैं यहाँ से क्लिक करूँगा ऐड मेंबर्स एंड देन इट विल आस्क अपना ईमेल आईडी बोलो. PIYLI हाँ. .TOI T for Tango, TO for Orange, I for India, ओके. TOI. ओके. @gmail.com. ठीक है, ये आ गया. अंशुल आपका ईमेल. सर मैंने चैट पे टाइप भी कर दिया वैसे, मुंजाल डॉट अंशुल. मैं ले लेता हूँ, इधर से ले लेता हूँ. हाँ जी. देखो इसने अपने आप आइडेंटिफाई कर लिया ना. सो आई कैन ऐड यू डायरेक्टली or I can send the invite. So let me say adding directly, add members, capture required, add members. So here now you can see posting is allowed, Right. subscription each email, when join date, and you are member. What I can do, I can make you either a manager or owner also of this group. Sort of admin. Yeah. Yes, sort of admin. And then now what we will do, say like conversations, and start a conversation. This is new, so subject like welcome to let us keep it short, and here in that thanks. I'm just simply and post the message. So now what is the what is going to happen? Two things. An email will go to you and then the message is here in some, because your email over a period of time वो नीचे चलता चला जाएगा, but here you can always come to the group and can read the messages. Yeah. That is an The message, yes. and you can reply to that, then the message will come back here. So this is how we use these. It's an example of a simple mailing list, but then there are certain professional mailing lists as well. Let me show you that. PDUCAU edu was. So this is, I suggest that if you want to keep updated yourself about education technology, you can join this community. This is Educate, and they discuss about the, like here, you higher education through the use of, and here he is saying the conference about the use of information technology. We are a non-profit organization. It's a very big organization. I was also a member of it for some time. So you see artificial intelligence, diversity, inclusion, hybrid learning, anything they are dealing with that, they go with it. So community member directory, monitoring, those things, they are here. And then so you can join their mailing list. So this is one, and then there is another one. It is called as like HNet. It's a interdisciplinary academic network which is dedicated to specific fields of study like history, literature, cultural studies, and something for social sciences and humanities online. It offers open academic space for scholars. इसके 2 लाख से ज़्यादा मेंबर हैं, वो अभी स्क्रीन पे आ रहा था.
So here this is who we are. You can see scholarly, pedagogical, professional behavior, and these are there. So ये देखो आप, ये इनका ये ऑफिशियल मेल है, ये स्पॉन्सरशिप के लिए, ये अनाउंसमेंट्स के लिए, नेटवर्क के लिए, रिव्यूज़ के लिए वगैरह वगैरह. All these things they offer these services. And the good thing is that this all work is under Creative Commons. So if you want to use it, if you cite it, then you don't need to seek permission because it is already allowed. This is one example. Then another thing which we need to discuss is about discussion groups. So discussion group, like either one-to-one or one-to-many, many-to-one, to discuss ideas, solve problems, something like to use that. So like Google group, which here we created, we can use it as a discussion group as well. We can start with say like advantage of email and can start exchanging our views in it. I just showed you about NPTEL, those things. Then there are other two very important discussion group platforms on the internet. I'm very sure you must have heard their name if you have not used that, but you may be knowing. But first I want to hear from you. दो एग्जाम्पल हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत सारे हैं बट दो ज़्यादा मीन्स मुझे उम्मीद है कि दो तो आप बता ही दोगे. डिस्कशन ग्रुप्स ऑन द इंटरनेट, सोचो. The Zoom meet. That is for web conferencing. A discussion group is a kind of a platform where we create community, ask a question, share our views, our answer, like that. It's I just forgot the name. There is one very common. Okay, yeah. TED. आपने पहले आपने जो रिप्लाई किया था ना, तो we have received the answer and this will go to everyone. So डिस्कशन ग्रुप का मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ. एक तो आपने QURA का सुना होगा. Yes, QA. So this is here. Many people they discuss lot of things on it, and all kind of serious question as well as funny question they think. अब कोरा से आपको एक और कुछ याद आ रहा है सिमिलर प्लेटफॉर्म? नहीं, मैं बताता हूँ. रेडिट देखा है कभी? सुना है रेडिट के बारे में? Yes. So this is also a community on which आप इधर देखो, गेमिंग के ऊपर लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स है, बिजनेस है, क्रिप्टो है, टेलीविजन है, सेलिब्रिटी है, all kind of things people discuss on it and start taking part in conversations. So these are the examples of Discussion groups. डिस्कशन ग्रुप्स. ठीक है, और ये तो प्याली जरूर बता देंगी. अब जो तीसरी चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आर ये वाला नहीं. Sir. नहीं ये वाला नहीं, बिल्कुल मुझे पूरा लिखना चाहिए था ये. Okay. RSS feeds. क्या होता है RSS feeds? ये तो आपके जर्नलिज्म का पार्ट है. Yeah. Blogs and online magazines. Yes. RSS फीड्स में क्या होता है, देखो मैं अब आपको एक वो बताता हूँ. हमने पहला मेलिंग लिस्ट किया था. तो मेलिंग लिस्ट में क्या है कि आप मेल भेजते हो लोगों को, ठीक है. RSS फीड में एक अच्छी चीज़ क्या होती है कि जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, आप उसके RSS फीड को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो जैसे ही कोई टाइम्स ऑफ इंडिया नई न्यूज़ उसमें ऐड करेंगे, इमीडिएटली वो आपको डिलीवर हो जाएगी.
और आपको आरएसएस की फुल फॉर्म मालूम है? इस वाले आरएसएस की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं देखता हूँ ये देखो, ये ना इतना इन्होंने वो उसमें कर रखा है कि ये पॉपअप हो रहा है वापस। गूगल जो है वो इसी को पकड़ रहा है दूसरी जगह नहीं जा रहा। ओके, उसको बोलते हैं हम रियली सिंपल सिंडिकेशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएस। It is a web feed that allows users and applications to access updates in a standardized computer readable format. और ये इसका लोगो है RSS का. It is a universal logo for that. ये देखो, it is regularly delivers updates. So for example, हम मान लीजिए जाते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया RSS. तो ये आ गया RSS feeds, really simple syndication. Most of the agencies which generate news on regular basis, they have their RSS. It is a way of providing content to the, मेरे को ना ये जो किसी भी चीज के ऊपर होवर कर ले जाओ ना, फिर उसका वो ओपन हो जाता है बॉक्स. To provide content to user browser or desktop in an efficient way by using RSS feeds, the user can stay updated on the news from Times of India and other news every day. It is It's a form of provided. copyright, sir. क्या चीज? It's a form of a copyright. You cannot drag or cut paste or copy it. नहीं, it is simply a news item or any other update You being can see delivered. the news item, but you cannot copy it. Like नहीं, even you can't copy an image. yes, yes, because it is their content, but it is just informing us that कि अब ये नया हुआ है. वो जैसे आप देखते हो ना टीवी के ऊपर आजकल everything is a breaking news. कोई भी कुछ भी हो रहा हो, it is always a breaking news. This is, but this is उसी तरीके से एजुकेशन के अंदर है, उसको हम बोलते हैं EDUSURGE, एडू सर्च. ये देखो एजुकेशन जर्नलिज्म, पता था आपको इसके बारे में? वेयर इज, उनका होता है ना एक अबाउट अस. ओके, अबाउट एडू सर्च कि ये क्या करते हैं. EduSurge is a digital news and research magazine about education that illuminates and informs and ignites your curiosity. We bring you human-centered insights into it. And here is how we do it. So, education में जो भी हो रहा है उसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, they keep you informed. Daily website, weekly newsletter, podcast, social media platforms, like that, they keep on informing you. So this is, they also, you can subscribe to their RSS feed, and then like here, sign up for you, and you can follow, and it will keep on sending. So it is important to note that availability of the specific mailing list or discussion group or RSS feeds means it may vary over time because the platforms, they can get new facilities, new functions available to. उसके बाद आपके इसी ब्लॉक के अंदर एक टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं RLO, दैट इज reusable learning objects. These are called as RLO. It is a type of online instruction that provides digital educational resource which can be reused, scaled, and shared from a central repository in support of instruction. मैं एग्जाम्पल्स देखता हूँ इसके, काफ़ी एग्जाम्पल हैं, बिकॉज एजुकेशन में ये काफ़ी बहुत यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है. जैसे आप ये देखो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको यूज़ कर रही है. एंड हेयर इट इज़ द मॉड्यूलर कंटेंट. इस तरीके से आप उन चीज़ों को बनाते हो. तो पहले ये वाला इमेज देखते हैं.
example of reusable learning objects. So I hope this image can be, मैं आपको ठीक दिख रही होगी ये. So see here, low tech materials, web ready presentation, audio or video on demand, virtual classroom, publisher textbooks, content on CD or DVD, web based training, interactive 2D or 3D simulation or streaming video. Any kind of thing they can be used and delivered as reusable learning objects. So what we can how we can define them, that we can define them as self-contained digital resource designed to support learning and instruction. They are typically multimedia in nature. They are available in various formats जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, like text based, image based, audio, video, simulation or interactive elements. Mostly they are designed to be modular in nature, which can be used independently or they can be integrated with larger instructional material. That is the benefit. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं? पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी रीयूजेबिलिटी. They can be reused in different learning contexts and settings. They can be created with the intent of using across multiple courses, modules, or learning experiences. So reusability. एक बार आपने बना दिया, आप उसको अलग अलग कोर्सेज के अंदर आप यूज कर सकते हैं. फिर granularity. They are typically granular in nature, focusing on a specific learning outcome. So they are designed to address a particular concept or a skill or a topic so that the students can focus on a specific area of interest. तीसरी इसकी फीचर है interoperability. Because they are created using standard format and protocol, so we can merge them with various learning management systems or e-learning platforms. For example, YouTube video. It is available, and then you can put it on any LMS, on your own blog, on your own website, or in various formats. And then there is another feature of them. It is called as metadata. metadata. Do you know what is meaning of metadata? It is called as data about data. तो पुराने ज़माने में आपने वीडियो कैसेट्स देखे होंगे, तो वीडियो कैसेट की जो स्पाइन होती है उसके ऊपर कोड लिखा होता था, और जो उसका लाइब्रेरी वाला है वो उसको देख के ही बता देता था कि उस वीडियो के अंदर क्या होगा. तो दैट इज़ अबाउट डाटा. और ये कई किस्म का होता है, जैसे टेक्निकल, ऑपरेशनल, फिर बिजनेस, जो आप उसके डिफरेंट टैग्स. आप सिंपली ऐसे देखो, आप लाइब्रेरी में जब जाते हो, कोई भी बुक लेते हो, तो लाइब्रेरी वाले उसके ऊपर एक एक्सेशन नंबर लगा देते हैं, और उस कोड को देख के वो बता सकते हैं कि बुक कहाँ पर होगी, किस चीज़ की होगी, कैसे किस चीज़ को डील करती है वो. तो ये जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, इनका मेटा डाटा हमें किस चीज़ के बारे में बताएगा? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट ऑडियंस, लर्निंग आउटकम्स वगैरह. और मेटा डाटा का फ़ायदा क्या है? इट हेल्प्स इन सर्चिंग, डिस्कवरिंग एंड रिट्रीविंग रेलेवेंट लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया. वो उसका बड़ा मीन्स एडवांटेज है. और ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी है. मीन्स लाइक अर्ली 90s में डेविड वाइले, DAVID, मैं आपको उनका पिक्चर भी दिखाता हूँ. DAVID वाइले RLO. ये है डेविड वाइले. इनका लिंक्डइन का मैं आपको दिखाता हूँ. इन्होंने लूमिंग के नाम से अब अपना वो इनकी कंपनी है. अरे यार, ये लिंक्डइन ने ये कब से कर दिया बताओ. लिंक्डइन के पेज पे जाने के लिए भी मुझे एक पजल बतानी पड़ेगी.
use the arrow to rotate the animal to face in the direction of the hand. ये भगवान, oh, that was not quite right. पागल है क्या ये? मैं एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ. ओके, मेरे पास दूसरा तरीका है. I'll simply go and he is David Wiley, ये वाले, this person. He is the person who worked in the initial phases and आपके डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट बंदा है जो इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है. आप ये देख रहे हो लर्निंग ऑब्जेक्ट स्टार्टेड और किस तरीके से, ये देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ लर्निंग ऑब्जेक्ट और ये डेविड वाइले का नाम आपको दिख रहा है इधर नीचे. So this is there and after that IEEE ने इनके ऊपर काम किया and IEEE gave IEEE we call it as LTSC. ये इनके स्टैंडर्ड हैं लर्निंग टेक्नोलॉजी इंटरऑपरेटेबिलिटी के नाम से. So IEEE लर्निंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स कमेटी, they also created gave recommendations on learning object metadata. So this is how they work and then they, उसके बाद एक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक एजेंसी है, दिस इज कॉल्ड एज ADL USA, दैट इज कॉल्ड एज एडवांस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग. देखता हूँ इसी से साइट आ जाएगी क्या? नहीं, ये कुछ और खोल रहा है. एनीवे, दैट इज एडवांस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग. और उसी तरीके से इंडिया के अंदर NPTEL वगैरह जो हैं वो चलते हैं. देयर आर वेरियस LMS दैट इज इनटू दैट. नो, इनका फ़ायदा क्या है? देयर इज ए गुड एडवांटेज ऑफ देम दैट वी कैन क्रिएट SCORM पैकेज. SCORM पैकेज. So SCORM is called as Shareable Content Object Reference Model. ये क्या है कि जो स्टैंड अलोन रनिंग कोर्स मटेरियल जो बनाया जाता है वो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से ये है. ओके, लेट अस सी व्हाट इज SCORM. तो आप ये देखो, आपका कोर्स है, लर्निंग मैनेजमेंट है और ट्रैकिंग है. ये एवरीथिंग इट कैन बी यूज्ड बाय दैट. बेनिफिट्स हैं इसके. Most used file formats, it is one of the thing. Then we can track the learning progress of our student. We have a control over our course. तो इनको हम बोलते हैं SCORM package. So the first step to create SCORM is to have a structured format, like developing multimedia asset, instructional material, assessment, anything. The thing is that we should have a specific learning outcome and learning objective for our content. फिर सेकंड स्टेप के अंदर हम उसको किसी LMS के ऊपर अपलोड करेंगे, पैकेजिंग. तीसरे स्टेप के अंदर हम उसका मेटा डाटा डिफाइन करेंगे कि कौन टारगेट ऑडियंस है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है. दैट विल बिकम मेटा डाटा because it will help in discovering it, searching it, and then we will see that what are the SCORM standards it is following, and then about its quality assurance and updates. We keep on working using those things on it. मैं आपको कुछ टूल दिखाता हूँ जिनकी हेल्प से हम SCORM पैकेज क्रिएट कर सकते हैं. Adobe Captivate, Captivate. एक तो ये टूल है, 30 डे का फ्री ट्रायल है, यू कैन यूज इट. हियर देखो, डिजाइन प्रोफेशनल लर्निंग कंटेंट विद टेम्पलेट्स. This is one of the, but it is, since it is a proprietary software, after that you may need to, but it is very good, one of the best available in the market.
out there to create content for that. Similarly, there is another product which is very articulate storyline. Yeah, this software, they are very good for online courses. This Storyline 360 to create interactive engaging e-learning content. You can have free trial, overview, content library. देखते हैं इसका कोई एग्जाम्पल. ये यहाँ पर आपको ये देखो, ये लाइब्रेरी एसेट है. बिल्ड ब्यूटीफुल ई लर्निंग इन नो टाइम. और ये सारी चीज़ें ये इन्होंने इसको लेकर बना रखी हैं. ऑल दीज आर फॉर योर ऑनलाइन कंटेंट. वंडरफुल प्रेजेंटेशंस. 12 million photographs, videos, and more. How they give you this, and it is A very. storyboard format, sir? Huh? Is it a storyboard format? It helps you. Yeah, initially it is the template is on storyboard where you integrate all these things. अभी जैसे आप यहाँ पे इसमें देख रहे हो, you select all these components, and then it will combine everything and will make it as a wholesome package. So you don't need any other special tool or platform. You just double click it and it will play. Right. उसी तरीके से तीसरा टूल है LECTORA Lectora Inspire. So it is another e-learning authoring tool. They say most powerful to create online learning. And there are the features. They have their own resources. So they have a lot of things. Instructional design, scrolling courses, interactivity, like that. So this is Lectora Inspire. Then iSpring is also another very important iSpring suite. So iSpring authoring tool, create courses on your own. Interactive quiz, role play, video tutorial, quiz, interactive course. You can make them using this iSpring. And then there is a cloud-based system. It is called as Whoko Learning. Create beautiful, responsive e-learning. So here you see, creating beautiful e-learning has never been so easy. So why choose? It is simple, advanced features. Right. It is easy, you create them. So these were the paid courses, but let me show you some of the free or open source tools if you want to develop. There is another ADAPT, Adapt Learning. This is an open source e-learning authoring tool which supports SCORM packages. You can say here, it is a free and easy to use e-learning authoring tool that creates fully responsive multi-device e-learning content. So welcome. It is a free, easy to use. You can simply get started or you can download it and start working. Responsive e-learning. Responsive e-learning का मतलब मालूम है आपको? आपका कंटेंट जो भी आप डिवाइस यूज करते हो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा. मोबाइल पर स्क्रीन ऐसे हो जाएगा, टैबलेट पर ऐसे हो जाएगा और डेस्कटॉप पर ऐसे हो जाएगा. That is there. So you can create your courses. It provides you, and lot of community is there. So this is free tool. Adapt Learning. Then another is EXE Learning. EXE Learning.
So here you see EXE Learning. It is a free libre software under GPL2 which create educational interactive web content. This is the website. तो बहुत इजी है. आपको अपना जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, यूर फ्री एंड ओपन सोर्स एडिटर टू क्रिएट एजुकेशनल रिसोर्सेज, देन इट कैन गो. और आप ये देखो, एप्पल के लिए है, विंडोज़ के लिए है, लाइनेक्स बेस्ड है. आप सोर्स कोड इंस्टॉल कर सकते हो. जब आपने ज्वाइन नहीं किया था तो मैं अंशुल से डिस्कस कर रहा था कि ओपन सोर्स कोड क्या होता है. तो हेयर दिस इज द सोर्स कोड विच यू कैन डाउनलोड and then you can modify if you want. You can modify and it is easy to use. Yeah, देखो, all these things they are there. Another tool is H5P. So create, share, reuse interactive content within your browser, and there are around, create a free account and you can use. These are the examples and downloads. और ये तो RLO का, रीयूजेबल लर्निंग आउटकम का बहुत फैंटास्टिक एग्जांपल है ये वाला. आप किसी भी चीज को करो और आप उसको रीयूज कर लो, जैसे इंटरेक्टिव वीडियो. ये बना बनाया कोड आपको देता है. आप सिंपली ये इंटरेक्टिव वीडियो आ गया और ये देखो, आप ये उसी के नीचे इन्होंने कह रखा है रीयूज. आप इसका सिंपली एम्बेड कोड लेके अपनी वेबसाइट पे भी आप एम्बेड कर सकते हैं. आपको खुद बनाने की जरूरत ही नहीं है. वो हो गया. और उसी तरीके से एक है जर्टे. दिस इज जर्टे, award-winning browser-based tool, allow anyone to create interactive learning material quickly and easily. It is also open source e-learning tool. Get started और ये इसके examples हैं और demonstrators हैं. Template which you can use. आप जैसा कंटेंट बनाना चाहो उसके हिसाब से ये आपको टेक्स्ट पेज बनाना है, मीडिया पेज बनाना है, चार्ट बनाने हैं, गेम बनाने हैं, जो भी आपने करना है ये आपको टेम्पलेट दे रहा है और उसके हिसाब से फिर आप उसको यूज़ करते हुए आप ये बनाएं इस तरीके से. सो दिस इज हाउ वी यूज इट. एंड देन द लास्ट थिंग इन दिस वन, व्हाट आई वांट टू शो यू, टू थिंग्स. आपके सिलेबस में है वेब 2.0. Web 2.0 is the stage where we used to say read write web, but अभी करंटली क्या है कि वेब 2 बहुत पुराना हो गया. जब विकीपीडिया बना था तो उसको वेब 2.0 बोलते थे. Now is the stage of web 3.0, web 3. Let me go with web 3 technology. When we say blockchain, that means it is web 3 technologies. So blockchain, NFT, etc., they are coming. ये आप यहाँ देखो. What is Web3? Open source. It is open source software will use. Everyone will use zero trust, networking, reach the edge, distributed. It can be distributed between device, between user, between services, without a centralized authority approval. आपको वेब 2 और उनके अंदर अथॉरिटी चाहिए थी, यहाँ पे अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है. कोई भी अपना कुछ भी बना सकता है. और इसीलिए आप एक चीज़ नोट की होगी आपने कि आजकल NFT बहुत पॉपुलर हो गए हैं. दीज आर दी NFT. इनफैक्ट इवन अमिताभ बच्चन, सलमान खान, उन लोगों ने भी अपने NFT रिलीज़ किए थे. जैसे अमिताभ बच्चन NFT अपने उनकी शोले की पिक्चर का ये वाला पोस्टर सबसे पहले. दिस इज हिज NFT, originally signed. These are the things, NFT. So this is him. उसी तरीके से जब अमिताभ का आ गया तो सलमान खान ने कहाँ पीछे रहना था, तो उनका भी आ गया. So here NFT coming soon, those things.
और आपको हंसी आएगी, आप उनको जानते हो जो WWF में हमेशा पिटते थे हमारे ओन इंडियन, और मेरे को बड़ा गुस्सा आता था कि उसको बोलते हैं ग्रेट खली। खली खली। इतना पहलवान होने के बावजूद भी ये हमेशा बेचारा WWF में मार खाई है इन्होंने। इनका भी अपना खुद का NFT इन्होंने लॉन्च किया। ये इनके NFT, दिस इज नॉन फंजिबल टोकन्स which are digital assets and they are unique in nature. Only one will be there. There will be no copy of it. अभी आप जैसे देखो, आप जो रेनॉल्ड्स का पेन खरीदते हो, एवरीबडी इज थिंक देयर इज नथिंग स्पेशल। लेकिन आपने देखा होगा कई बार जो जैसे कुछ बैग हैं या विंड कार कंपनी, जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वो कहती हैं कि जी दुनिया में हमने ये केवल 10 ही कार बनाई है, और इसीलिए उनका प्राइस हायर होता है। तो दैट थिंग, सो this is the stage of Web3, but so I wanted to tell you, but आपके कोर्स में है Web 2.0। तो Web 2.0 का मतलब क्या हुआ कि जब शुरू के अंदर सर टिम बर्नर्स ली ने, ये वाला मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, जब शुरू में सर टिम बर्नर्स ली ने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था, तो दैट वाज ए स्टैटिक वेब। Means you can upload your information, students can download the information and that's all। फिर उसके बाद later on Web 2 आ गया, जिसको हम बोलते हैं read and write web। That was the era when Wiki Educator was created, and on Wikipedia anybody can create their own entry। और फिर सोशल मीडिया आ गया। आप ये देखो, ये Web 2 में सोशल मीडिया। The thing is that you can now not only read the web, you can write on the web। So writing on the web like using social, जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कोई फोटोग्राफ अपलोड करते हैं, समथिंग, that is the power of Web 2.0। So publishing content here means it is a to and fro means a feature of that। So there are many advantages of this thing, that functionality increase हो गई। People, they were now not only the downloaders but they are the content creators। So आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दिस दैट एटसेट्रा, that is all the power of Web 2.0 that is there। And the last topic in this course is about learning management system। हमने काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स को किया। आप यूनिवर्सिटी इग्नू के अंदर मूडल यूज़ किया जाता है। सो लेट मी शो यू मूडल वेबसाइट। दिस इज माय मूडल learning management system। So this is the interface of Moodle, and all these courses, they are created. Say for example, let me show you a okay, like retail store operations। So this is the logo of the university, and after that logo of the image, welcome to store retail operations, and announcements, get to know each other, course information, what you will learn in this course, then there is a video, then teacher notes, students notes, and then now the content, there is a quiz on stores, then these are the pages, history, retail in India, what retail entrepreneurs do to our economy, is on store operations, then there is a video for retail India sector, then origin of store, type of retail outlets, type of retail stores, managing। इस तरीके से कंटेंट आपको उसके ऊपर बनाया जाता है। ये है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज हाउ वी कोड। The students, they are given the admission into it from participants। You can see how many students are there, enrolled users, you enroll them, and then they can access the content material into it। Okay, so I'm stopping my screen now,
Then we have covered this fourth block, all about these technology tools which are used for enhancing the teaching and learning capability of our systems. So, any questions? No, it was No, sir. very nicely explained. Sorry, Anshul, you had something to say. I was just saying that we are good. Yeah, it's very Okay. interesting. Okay. It's very interesting to know all these tools and LMS portals and everything. I have tried to share those tools which are more recent. Means it may happen that the tools which I have told you, they may not be in the course because course was written 10 years ago. उस वक्त तो चैट जीपीटी भी नहीं होता था, तो इसलिए टू अपडेट यू, बिकॉज आई थॉट दैट किताब तो आपके पास है But ही. will the questions come from the ones that you have explained to us? No, the question will not be on a tool specific. The question will be like asking you to define blended learning. Okay. Then you define the process. है ना. Okay. अब जैसे ईमेल है, हाँ. the question may be about explain the educational pedagogical benefits of email communication. अब आपकी मर्जी है, आप उसमें उसको एक्सप्लेन करते हुए आप जीमेल का एग्जांपल दो, याहू का दो, रेडिफ का दो, किसी का भी दो. दैट इज Hmm. मींस टूल इज Hmm. नॉट इम्पोर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, पेडागोजी इज इम्पोर्टेंट. Right. इसीलिए मैंने आपको एलएमएस जब बताया तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स दिखाए कि आपकी चॉइस है, कोई भी आप प्लेटफॉर्म एक्सप्लेन कर सकते हैं, Right. और एवरीबडी वर्क्स इन द सेम. जो ईमेल है, कोई भी ईमेल हो, they all work in the same way. You compose a communication, then you send it to someone. If you want to attach something, you attach something. These are the basic functions. आप याहू यूज कर रहे हो, जीमेल यूज कर रहे हो, हॉटमेल यूज कर रहे हो, रेडिफ यूज कर रहे हो, प्रोसेस यही है सबके. ठीक है ना. तो चलो ठीक है, देन वी कैन क्लोज. मोहन जी, Kelly, about your course material, जी uh, sir. let us speak after this class. जी sir. I can give you some alternatives so that your course material problem can be resolved. Okay? Right, sir. Sir, one more question, sir. हाँ बोलो. Sir, regarding all the assignments, also, I'm just, as I spoke to you yesterday, as Aarti has shared with me the assignments, what need to be submitted. Do हाँ. I follow the same or have I to wait for another नहीं नहीं assignment? नहीं नहीं, वो असाइनमेंट्स कॉमन होती हैं. अंशुल, आपको असाइनमेंट मिल गए क्या? नहीं सर, अभी नहीं मिला. नहीं, आपको भी अपनी असाइनमेंट्स टर्म एंड एग्जाम से पहले जमा करानी होंगी आपके रीजनल सेंटर पर. तो आपको भी वो अपनी एक्सेस कर लो. ओके सर. मेरा ख्याल में या तो हो सकता है इग्नू की वेबसाइट पे भी हो, नहीं तो आप अपने रीजनल सेंटर पर, नहीं तो आरती जी को आप एक मैसेज डाल सकते हो. ठीक है. उनके पास है तो वो शेयर कर देंगे आपको भी. Sir, any sort of besides the written, handwritten assignments, any sort of आप वो मैंने जैसे आपको बताया था, गो अहेड विद द कंप्यूटराइज्ड वन. आई डोंट थिंक दैट विल बी अ बिग इशू. ठीक है सर, ठीक है सर. इट्स ओके. Thank you, sir. मींस इफ I have to make an assessment of those, it is fine with me. I was just trying to ask, sir, is there going to be any practical assignments besides the written assignments? No, I don't think there are any practical assignments. Right. Whatever has been given to you, that is the only one. इसके क्योंकि ये आपका नॉन प्रैक्टिकल कोर्स है, तो इसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट थे, काउंसलिंग सेशंस जो नेक्स्ट वीक में ओवर हो जाएगा, और जो आपको असाइनमेंट्स मिली हैं वो आपको करके और आपके रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर पर जमा करानी है. मीन्स ये हो सकता है कि क्योंकि इस कोर्स के ज़्यादा स्टडी सेंटर्स नहीं हैं, तो आई डोंट नो
which address they have given to you, either at the regional I center am having Jamia. or study center, or maybe Stride, because Stride, this program was developed by Stride at Madangadi. Sir, my study center is it was 700, now it's gone to Jamia. So, ठीक है, फिर हो सकता है आपको जामिया में जो सेंटर है वहाँ जमा कराने पड़ेगा। हाँ, वो जमाल साहब के पास। हेलो मिस्टर शिवदासन, how are you? Sir, due to network issues, I can't access, sir. So, how I can get to these classes from YouTube, I think? I am sure that our Chandigarh colleagues, regional center colleagues, they will be sharing this recording, Yes. maybe on their YouTube channel, or मोहन जी, आप बता सकते हो ये जो रिकॉर्डिंग है ये लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं? एक्चुअली द इशू इज दैट मोहन जी हु इज एट रीजनल सेंटर चंडीगढ़ फॉर दिस हु इज मैनेजिंग द प्रोग्राम, उनका Yes, sir. माइक्रोफोन काम नहीं करता है, he has to type the answer. Okay, sir. 1 week or two, it may be available in Facebook, I think. Okay, sir. Yes, yes, yes. Okay. Okay, Chandigarh. I'm following classes in. No, he has, Shivdasan ji, Yes, sir. Mohan ji has written Yeah, that yeah. please go to the official website of RC Chandigarh, Okay, sir. and there you will find the previous recordings, Okay, sir. Okay. and even Facebook also. Okay, thank you, sir. Yeah. अंशुल, आप भी जो पिछली क्लासेस मिस हो गई थी ना, तो आप जो चंडीगढ़ रीजनल सेंटर है उनके फेसबुक पर से आप भी एक्सेस कर सकते हो. Yes, sir. Sure, sir. This is really a good help for our students. Okay. Sir, is there a compulsion of attendance in this? I'm not sure. Can you ask Mr. Mohanji that? I'm not sure. Mohanji, do you know about if the attendance is compulsory? If yes, how many attendance have to be? Because in the older times when I was in IGNU, there were two type of courses. Yeah, he may have to ask the. No, I understand you may not be dealing with that thing. I think regional director has to indicate that. पहले तो ये होता था कि जो थ्योरी बेस्ड कोर्सेज हैं उनके अंदर अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती थी. प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज जैसे कंप्यूटर के कोर्सेज हैं उनके अंदर 75 या 80% कंपलसरी होता था. बट आपका थ्योरी वाला है तो मैं भी कोई श्योर नहीं हूँ कि ऑफ लेट कोई पॉलिसी चेंज है या नहीं. रीजनल सेंटर ही इसके बारे में क्लियर कर सकता है. बट I will give you some resource. You can go there and get your material, and you can get this thing also cleared from there. Yes, sir. Thank you, sir. आप कौन से एरिया में रहते हो? Sir, I'm in Housecars. Going to Noida Regional Center will be convenient to you. It is in sector 62 perhaps. Oh, that's fine. I can manage. ठीक है, चलो. Mohan ji, you can stop the recording now because we are discussing other issues. Yes. And thank you so much, everyone. Please call me on phone after